Good morning to all. Good morning. Hello. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Can you see the PPT? Yes, Yes, sir. Okay. yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. So in the last class, we have started with introduction of digital systems and signals, and then we have started number systems, in which we have first discussed the decimal number system, and we have completed the discussion of octal number system. So I'm starting with octal number system again. So this will be a recap. Then we will follow. Uh, then it will be followed by binary system and hexadecimal system, and then we will see the conversion of one number system to other number system. Okay, so octal number system, the base is 8, so the total digits are from 0 to 7. Okay, so these are 8 different digits. With the combination of these digits, we will define any number in the octal number system. Okay, and the weights is defined by base. This is base to the power position, just like the decimal number system. This will be common for all number system, and the magnitude is sum of digit into weight. Okay, so when you perform this thing, a digit into sum of digit into weight, so whatever you get, this is the decimal equivalent. Okay, so suppose 512.74, so you have to write it in this way. In bracket, outside the bracket, you have to add the subscript, that is the base of the system. So for octal number system, the base is 8, so you have to add a subscript. Okay, so 512.74, this is given in octal number system, and the position, this is position 0, this is position 1, this is position 2, this is -1, this is -2. So base raised to power position gives you weight. 8 raised to power 0 is the weight of this place, 8 raised to power 1 is the weight of this place, and 8 raised to power 2 is the weight of this place. And after decimal, 8 raised to power -1 is the weight of this place, and 8 raised to power -2 is the place of this digit. So digit multiplied by its weight. Okay, so 2 multiplied by 8 raised to power 0 is 1. 1 multiplied by 1 multiplied by 8 raised to power 1, and then 5 multiplied by 8 raised to power 2, and for this 7 multiplied by 8 raised to power 1, and 4 multiplied by 8 raised to power -2. So the result is 330.9375, and this value is in decimal number system. Okay, so this is the decimal number system. So
you can remember this thing. This is how we can convert a given number in any base, in any for any base. So any number, any base, you have to follow summation of digit into weight. Okay, digit weight, where weight is, this is base raised to power position. So this value will be in decimal. This value will be in decimal. ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, कोई भी गिवन नंबर सिस्टम हो, बाइनरी हो, हेक्साडेसिमल हो, या बेस 7 हो, हम तो 4 ही पढ़ रहे हैं, बट आर कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, आर कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है, बट ओनली सम वैल्यूज मेक सेंस. तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, सिंपल, बहुत सिंपल है सब. हेक्साडेसिमल में भी यही होगा, बाइनरी में भी यही फॉलो होगा. नेक्स्ट आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे. सो we have only two possibilities, either 0 or 1. And because of this, Sir, your voice is not audible. Yes, sir. hello, You are not audible. Now you are audible, sir. Yes, sir. Now you're audible. base is Sir, there is a lot of. डिस्टर्बेंस आ रहा है, अब पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मुझे भी नहीं पता. अच्छे अगर कोई अनम्यूट है. सर दोबारा इंसर्ट कीजिए सर माइक को या अपने हेडफोन को, तो मे भी शायद ठीक हो जाए. Okay, now, या नाउ इट्स क्लियर सर. okay, so I have removed the headphone, now I am using computer mic. ठीक है अब? ओके. Yes, या sir. राइट. Perfect, sir. ठीक. तो okay, so we were talking about binary number system, and we have two digits, 0 and 1. ठीक है, these are called binary digits or bits. ये ध्यान रखना, bits. ओके, हम मेमोरी भी, हम पेन ड्राइव की भी बात करते हैं तो जीबी, गीगा बाइट्स, ठीक है. तो हम जो जीबी बी होता है वो बाइट होता है, और 1 बाइट दैट इज इक्विवेलेंट टू 8 बिट्स. ओके, हमारे कंप्यूटर में जनरली आजकल तो 1 टेराबाइट, 1 टीबी, दिस मेमोरी इज कॉमन, और 512 जीबी. ओके, सो दिस बी इज बाइट एंड 1 बाइट इज इक्वल टू बिट्स. तो ये बिट्स यहीं से आया है. दिस 1 बिट इज इक्विवेलेंट टू 1 बाइनरी डिजिट. ठीक है, तो weight, again the weight is defined by the same formula. Weight is equal to base to the power position, and the magnitude is sum of bit, whatever is the value of bit, it can be either 0 or 1, that multiplied by weight, and whatever will be the result, that will be the decimal equivalent of the given binary number. Okay, so for example, 101.01, this number is given, this is in binary number system. Okay, and the position is again defined in the similar manner, 0 1 2, that is on the left hand side of the decimal, and -1 -2, that is on the to the right hand side of the decimal. And this, if we will follow this formula, weight is equal to base to the power position. So 1, this is 0 1 2, this is -1 -2, so 1 multiplied by 2 raised to power 0 plus 0 multiplied by 2 raised to power minus 2 raised to power 1 plus 1 multiplied by 2 raised to power 2. And for decimal, this is 0, so 0 multiplied by 2 raised to power -1 plus 1 multiplied by 2 raised to power -2. So the value is 5.25.
So this is the decimal equivalent of 101.01. Okay, we will see the conversion in the reverse way also. Okay, 5.25 को 101.01 में कैसे लाना है वो भी हम आगे देखेंगे. ठीक है. Okay, one more terminology is used, nibble. This is just for your information. So group of 4 bit is called nibble, and a group of 8 bits is called byte. So this is the famous notation. Generally we use this byte for mentioning the capacity of any given memory system, pen drive or hard disk or any given memory system. Okay, so the last one that we have to study is hexadecimal number system. Okay, hexadecimal means 16. So the base is 16. So the digit that we have to use to represent any number in this number system are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Up to 9, we will use the number that were used in decimal number system. And after 9, we will use the notation A, B, C, D, E, and F. Okay, so these are the numbers that we have to use. Weight is defined by same formula, base into position. Base is 16, and the magnitude is defined by, again you will use same formula, that is summation of sum of digit into weight. So one example, given number is 1E5.78. So this number is given in hexadecimal number system. Okay, so we don't know what does this mean, so we have to convert this into decimal number system, so we will use this formula. Okay, so this is the position 0, 1, 2, and this is -1, -2. So 16 raised to power 0, here 16 raised to power 0 multiplied by 5, then 16 raised to power -1 multiplied by 14. So E is equivalent to 14. This is 9, this is equivalent to 10, this is equivalent to 11, 12, 13, 14, and then 15. So E is equivalent to 14. So instead of E, you have to use 14. So 14 multiplied by base raised to power position, 16 raised to power -1. And then we have 1. So 1 multiplied by 16 raised to power 2. And after decimal, 7 into 16 raised to power -1. And A, so instead of A, you have to use 10. So 10 raised to power 16, 10 into 16 raised to power -2. Okay, it can be calculated by using calculator, and the answer is 485.476565. So this is the decimal number. This is the decimal number which is equivalent to 1E5.7A in hexadecimal number system. Okay, so for any given number system, hexadecimal, octal, or binary, you have to follow simply this rule: sum of digit into weight. This is the magnitude in decimal number system. Okay, and this weight is simply defined by base raised to power position. Okay, so for binary, base is 2, for octal base is 8, and for hexadecimal base is 16. Okay, if any other base is given, let's say base is 7, okay, or base is, let's say, 30, then this formula is valid. This is universal formula, this is valid. Okay, for example, I have given you number 1, 3, 2, and this is for base 7. Okay, so if the question is asked that what is the decimal equivalent of this number, so simply you have to follow this formula. So 2 multiplied by 7 raised to power 0
plus 3 multiplied by 7 raised to power 1 plus this is 1 multiplied by 7 raised to power 2. कोई भी बेस दिया हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने आपको पढ़ाया नहीं है. We use this 4 number system exhaustively, but the formulas and the concept for this 4 number systems are valid for any other xyz number system. ठीक है, हमें इनसे ज्यादा मतलब होता है, इसका हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं. 713 का हमने नहीं किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कर नहीं सकते आगे फ्यूचर में. सेम फॉर्मूला आगे लगेगा और यही इसी तरह से आपको डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है. Okay, so this is the summary. Okay, we have a decimal number system. So we all are aware about this number system. Okay, then binary. तो binary को लिखने का मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको. Okay, so you can see that I have used 4 different bits. Okay, so how many decimal numbers are here? There are total 16 decimal numbers. Okay, 16 is equivalent to 2 raised to power 4. Okay, so to represent number from starting from 0 to 15, we have total 16 different decimal numbers. Okay, so we have to use 4 bits. We have to use 4 bits. Okay, if total number of decimal numbers are 8, for example 8, starting from 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गए हमारे 8 different decimal numbers. So 8 is equivalent to 2 raised to power 3. In that case, we will use only 3 bits. तो आप ये डिपेंड करता है हमें 3 बिट यूज करना है, 4 बिट यूज करना है, या 5 बिट यूज करना है, या 2 बिट यूज करना है. अगर सिर्फ 4 नंबर है 0, 1, 2, 3 और काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ध्यान रखना. So these are 4 different decimal numbers. 4 is equivalent to 2 raised to power 2. तो सिर्फ 2 डिजिट बाइनरी डिजिट यूज करना है, 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब डेसिमल नंबर 0 से लेके 17 तक है. ठीक है, अगर कोई गिवन कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, जिसमें हमें 0 इज मिनिमम एंड 17 इज मैक्सिमम. ओके, तो कितनी बिट का यूज करना पड़ेगा? अप टू 0 to 15 वी कैन यूज 4 बिट. ओके, 15 के बाद जैसे ही 0 to 31 वाली रेंज में हम जाते हैं, उसके लिए हमें 5 बिट का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज 32 इज इक्विवेलेंट टू 2 raised to power 5. ठीक है, तो अब जैसे ही वो रेंज क्रॉस कर गया, तो अब आपको 5 बिट यूज करना है. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना. तो यहाँ पे मैक्सिमम टोटल 16 डिफरेंट डेसिमल नंबर्स आर देयर, so we have to use 4 binary bits to represent these numbers. Okay, अब तरीका क्या होता है, इसको याद रखना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. So the bit on the rightmost side is known as least significant bit, LSB. least significant bit क्यों? क्योंकि इसका वेट सबसे कम है. ठीक है, इंटीजर अभी फ्रैक्शनल को अवॉइड कर देते हैं, तो दिस विल बी नोन एज least significant bit, the bit which is having least weight, and the digit at the rightmost side is known as most significant bit. ठीक है, इसका weight सबसे ज्यादा है. ठीक है, so if I say you 1 lakh rupees, 1 lakh and 1 rupees, तो इसमें most सबसे ज्यादा सेंस क्या बता रहा है? most, what is the most significant thing? 1 lakh. Yes. This is making least sense. 1 rupees is not making as much as sense as compared to 1 lakh rupees. ठीक है, तो इसलिए हम इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट को, राइट मोस्ट बिट को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अब जो आपका लेफ्ट मोस्ट बिट है, वो कैसे वेरी करेगा? इट विल कंटिन्यूअसली चेंज इट्स वैल्यू, इट विल कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ एवरी टाइम. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, then 1, then 0, then 1, then 0, then 1,
0 1 0 1 0 1, you can see that it is complementing it each time. एक बार 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ठीक है। उसके नेक्स्ट बीट पे आ जाओ तो ये 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, 2 बार 0 है, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 2 बार 0, 2 बार 1। फिर वापस से आ जाओ थर्ड बिट पे। ओके, ये 4 बार 0 होगा, 1 2 3 4, फिर 4 बार 1, 1 2 3 4, फिर 0 4 बार, 3 4, फिर 4 बार 1, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, ये अब 8 बार 0 होगा, 8 बार 1, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर आपको बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको याद रखना, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है जिसको हमें याद रखना पड़े, बहुत इजी है इस तरह से, ठीक है। एक बार 0 एक बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, ये पैटर्न रिपीट करना है। फिर 8 बार 0 8 बार 1, 5 बिट नंबर है, ठीक है। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, 8 बार 0, 8 तो हो गया सॉरी, 16 बार 0, ठीक है, एंड देन 16 बार 1, इस तरह से। तो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 डिजिट इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ऑक्टल पे आते हैं, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद फिर अब हमें वापस से रिपीट करना पड़ेगा 0, ठीक है। और 0 के बाद हम अब हम 1 अपेंड कर देंगे, देन 0 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। फिर वापस से अगर मुझे 16 रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से 0 एंड देन 2। डेसिमल में भी तो हम यही करते थे, 0 से 9, फिर वापस से 0 से स्टार्ट करो और यहाँ पे 1 ऐड कर दो, फिर चलने दो 19 तक, 19 के बाद फिर 0 ऐड करो और 2 लगा दो, इस तरह से। तो सेम ऑक्टल में भी फॉलो करना है, ठीक है। 7 के बाद फिर वही पैटर्न जो डेसिमल में करते हैं वैसे ही करना है। और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 and then A B C D E F। तो समटाइम्स दिस टेबल, मेकिंग दिस काइंड ऑफ टेबल, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये टेबल फटाफट बना लो तो बहुत टाइम सेव होता है कभी कभी क्वेश्चन करने में। तो जब ऐसा ट्यूट में आएगा या आगे कभी आएगा तो मैं इसको इस टेबल का यूज करके क्वेश्चन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। स्पेशली कन्वर्जन, जब हेक्साडेसिमल को बाइनरी या ऑक्टल को बाइनरी में करना होता है तो ये टेबल बड़ा हेल्पफुल होता है, इससे वैल्यूज बहुत जल्दी हम पिक कर सकते हैं। Okay, so now we will see, we have seen that किसी भी given number system को decimal में कैसे करना है। Okay, summation of digit into base raised to power position। अब हम उल्टा प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसको बाइनरी में कैसे करना है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे, और सेम डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे करेंगे। तो ये 1 बाय हम प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। प्रोसेस सबके लिए सेम है, बस ये फैक्ट बेस चेंज होगा, ठीक है, प्रोसेस वही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी। Okay, so what you have to do, you have to divide the number by the base. So for binary number system, the base is 2. For example, we have taken 13 in bracket 10. So this is representing 13 in numbers base, for base 10. तो ये हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको मुझे करना है बाइनरी में। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2, so I will divide this 13 by 2. Okay, so you have to take the remainder will be either 0 or 1, there will be only two possibilities, okay, when we are converting to binary। so 2 से अगर आप किसी चीज को डिवाइड करते हो तो या तो आंसर 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। तो टेक द रिमाइंडर either 0 or 1 as a coefficient, ठीक है, and take the quotient and repeat the division। okay, तो 13 divided by 2, quotient is 6, remainder is 1। okay, तो एक और चीज हमने लिखी कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है, जो भी रिमाइंडर वाली जो चीज है दैट इज योर कोफिशिएंट। सो वी हैव रिटन कोफिशिएंट हियर एंड वी हैव टेकन कोशेंट अगेन, जो कोशेंट है उसको वापस ले लिया, देन अगेन डिवाइड बाय 2, देन कोशेंट इज 3, रिमाइंडर विल बी 0, सो a1 इज 0। रिमाइंडर पार्ट मुझे अलग से लिखते जाना है और कोशेंट को वापस से यहाँ लेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, रिमाइंडर इज 1, so
रिमाइंडर को मैंने यहाँ लिख लिया, एंड देन फाइनली 1 divided by 2, quotient is 0 and remainder will be obviously 1, and I have written it here. E3 is 1. ठीक है, so answer is, अब नीचे से रीड करना है, ऊपर से नहीं नीचे से रीड करना है. You have to read from downward to upward. Okay, इस डायरेक्शन में रीड करना है. So 1 1 0 1, this is the answer, and you have to add a bracket and add a subscript 2, that is the base of binary number system. So this is a very simple process. ठीक है, डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर से वापस बेस को डिवाइड, सॉरी क्वोशंट को फिर से डिवाइड करो आप बेस से, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर विल बी आइदर 1 और 0, तो उसको साइड में लिखते जाओ एंड देन राइट इट फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीका है, ये आपको हमेशा फॉलो करना है. डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, एनी नंबर सिस्टम विथ बेस आर. अगर बेस 7 है तो 7 से डिवाइड करते जाओ, अगर बेस 8 है तो 8 से डिवाइड करते जाओ, अगर बेस 16 है तो 16 से करते जाओ. ठीक है, सो yeah, this is your LSB, least significant bit, and the leftmost is your MSB, most significant bit. अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट है. ठीक है, ये तो इंटीजर पार्ट था. फ्रैक्शन पार्ट है तो क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई द नंबर बाय बेस 2. सो फॉर बाइनरी द बेस इज 2. टेक द इंटीजर. Okay, if you multiply some fraction, so the integer part will be either 0 or 1, so you have to take this as coefficient. ठीक है, इसको अलग सेपरेट करते जाना है. टेक द resultant fraction and repeat the division. Okay, तो करके देखते हैं. Given number is 0.625. Okay, so you have to multiply continuously by 2. So 0.625 multiplied by 2, so the result is 1.25. The answer will be 1.25. So 1 is your integer part and 0.25 is your fractional part. So you have to write it down separately. Okay, so this coefficient is now this integer part. So write 1 separately. Then take the fraction part again. 0.25 is your fractional part. Again multiply this by 2. 0.25 into 2 gives you 0.5. Okay, so integer part is 0. So write it as a coefficient. And this is fraction part. Take it here. 0.5 into 2 is 1.0. Okay, now 0 is your fraction part, 1 is your coefficient part, so 1 is written here, 0 will be taken here. So 0 into 2 will give you 0.0. So stop here. So either you have to continue until you get 0, this multiplied by 2, 0 ये आ जाता है. Otherwise क्वेश्चन में दिया होगा 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक आपको फाइंड करना है. दैट इज मोर देन इनफ. अगर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली वो कुछ ना कुछ आते जा रहा है, 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करके रुक जाओ. दैट्स इट. अब इसको टॉप से बॉटम इस ऑर्डर में रीड करना है. सो 1 0.101, दिस इज द आंसर. टॉप से बॉटम में आपको आंसर इस वे में लिखना है. ठीक है, और कोई भी नंबर सिस्टम हो, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए यही करना है. द फ्रैक्शन पार्ट मल्टीप्लाइड बाय बेस. ओके, again multiply the base with fractional part and write the integer part separately. The integer parts, the combination of the integer parts will be your answer. Okay, and this is your LSB. In this case, this is your LSB, the rightmost bit, and this is your MSB, the leftmost bit after decimal. Binary to decimal तो हमने देख ही लिया था. Technique, multiply each bit by 2 raised to power n. So this is your base raised to power position, where n is the position, add the result. ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है. 10101011 to the base 2. Okay, so digit wise start किया. This, the position of this is 0 1 2 3 4 5. So 1 into 2 raised to power 0 is 1, 1 into 2 raised to power 1 is 2,
This 0 into 2 raised to power is 0. This 1 into 2 raised to power 3. This 1 into 2 raised to power 3 is 8. This 0 into 2 raised to power 4 is 0. And this 1 into 2 raised to power 5 is 32. Add them. The result will be 43. ये तो हमने देखा था. ठीक है, तो देखा आपने, बाइनरी से डेसिमल में करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में करना है तो डिवाइड करते हैं. रिवर्स प्रोसेस है. Now decimal to octal number system, and for octal number system base is 8. Okay, so now you have to continuously divide by 8. Okay, remainder 0 से 7 तक होगा. Remainder will be in between 0 and 7. So you have to write separately the remainder part, and again you have to divide the quotient with the base 8. So given number is 175, decimal number system, you have to convert it into octal. So 175 divided by 8 is 21, quotient 21, remainder is 7, write remainder separately. And divide 21 by 8, so quotient is 2, remainder is 5, remainder returns 2 is taken here, 2 divided by 8, so quotient will be 0, remainder will be 2. So write 2 here and then read it from bottom to top. So the answer is 257. Okay, in octal number system. और अगर fractional given हो, then you have to multiply. Okay, integer part and fraction part. So now you have to separate the integer part, and then you have to multiply the fractional part with the base. So answer is 4.0. So integer part यहाँ लिख लिया, fraction part यहाँ ले गए. So 0 into 8 will give you 0.0. So stop here. So 0.3125 in decimal is equivalent to 0.24. अब top से bottom पढ़ना है. 0.24 in octal number system. Same process. अच्छा, ये octal to decimal, ये तो हमने देखा था, multiply each bit by 8 raised to power n. This is the example, 724 in octal number system. So the position is 0. हाँ जी, hello. Okay, so position is 1 and the position is 2. So 4 multiplied by 8 raised to power 0, 2 multiplied by 8 raised to power 1, 7 multiplied by 8 raised to power 2. Just add them, 468 in decimal. Now decimal to hexadecimal. So base is 16. अब 16 से divide करना है, बाकी process same होगा. For example, the given number is 1, 2, 3, 4 to the base 10, and you have to find the hexadecimal equivalent. So divide it by 16. Okay, 77 is coefficient, 2 is remainder. 2 को ठीक है अभी लिखे, नोट डाउन करते रहो, मेमोरी में बिठा के रखो या लिख के रखो. Then again divide by 16. The quotient is 4. Remainder will be 13. 13 is equivalent to D in hexadecimal. Again divide by 16. So it cannot be divided by 16. So we will take quotient as 0 and remainder as 4. Okay. So फिर bottom से top order में लिखो. So 4 D 2. So this is the hexadecimal equivalent. For integer part और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये तो हमने देखा था. अगर कोई नंबर गिवन है ए बी सी टू द पावर 16, so 0 position is 0, 1, 2. Okay, c is equivalent to 12, so 12 into 16 is to power 0 is 1. A is equivalent to 11, so 11 into 16 is to power 1 is 176, and A is equivalent to 10, so 10 into 16 square, that is 256, so 2560. Add them, so 2748. ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है. डेसिमल से हमने देखा अभी बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, एंड रिवर्स.
ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। अब इसको आपस में कैसे करेंगे, बाइनरी को ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, या ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये हमने नहीं देखा है। ठीक है, तो ये देखते हैं ना, बाइनरी टू ऑक्टल। नाउ इन बाइनरी the base is 2 and for octal base is 8, so 8 is equal to 2 raised to power 3. Okay, so each group of 3 bit represent an octal digit. Okay, तो ये हमारा octal number given है 0 to 7। यहाँ पे मैंने टेबल बना रखा है, देखो, we will use this table. So octal number starting from 0 to 7, the binary equivalent. Okay, so each group of bit is represented by 3 bits. So 0 is represented by 000, then 001, 010, 011, 100, 101, 110 and 111। तो ये मुझे डिफरेंट ऑक्टल डिजिट्स के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट्स फॉर्म में पता चल रहा है। ठीक है, ये टेबल। अब मुझे कोई भी गिवन नंबर है, फॉर एग्जांपल दिस, आई हैव टू कन्वर्ट दिस 101 इनटू ऑक्टल। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं 3 बिट्स के ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 3 बिट का ग्रुप बना लो। फिर यहाँ पे अगर 2 है तो एक 0 अज्यूम कर लो मन से, क्योंकि राइट मोस्ट में आप लेफ्ट मोस्ट में कितने भी 0 लगाओगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ये एक ग्रुप बन गया। और फ्रैक्शन के बाद 0 1 यहाँ से ग्रुप बनाना स्टार्ट करो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ये बन गया ग्रुप। ओके, अब 110 देखो, 110 इज इक्विवेलेंट टू 6। ठीक है, ये हो गई ग्रुपिंग। ओके, you can assume 0, 110 is equivalent to 6, 010 is equivalent to 2, and this 010 is again equivalent to 2. Put a point here. Okay, so answer is 262, and that is in octal number system. ठीक है, अब octal number system है, उसको डेसिमल में करना, उसको सॉरी बाइनरी में करना, ये तो और ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। 2 के लिए क्या करना है, 010, तो 2 के लिए 010 लिख दो, हर डिजिट को उसके 3 बिट इक्विवेलेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। 6 के लिए लिख दो 110 और 2 के लिए फिर से 010। देखो ये मैच कर रहा है इससे। ठीक है, तो कोई भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर गिवन हो तो ये टेबल बना लो सबसे पहले, बहुत जल्दी आपका चीज सॉल्व होगा। ये टेबल बना लो 0 to 7 3 बिट इक्विवेलेंट। ओके, एंड देन यूज दिस टेबल। ठीक है, सेम अब ओके, वर्क बोथ वेज, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, दोनों कन्वर्जन यहाँ पे आ गए, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। Now binary to hexadecimal number system. So the base of the hexadecimal number system is 16 and base of binary number system is 2 and 16 is equal to 2 raised to power 4. So each group of 4 bit represents a hexadecimal digit. Okay, now you have to use this table. So in hexadecimal number system, counting starts from 0 up to 9, then A, B, C, D, E, F. Okay, और आपको हर हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी फॉर्म में लिखना होगा। ओके, तो 0101, 2 बार 0 2 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1 और 8 बार 0 8 बार 1। ये टेबल विद इन सेकेंड्स में आपका बन गया। ठीक है, ये बना ही लेना, बहुत जल्दी कैलकुलेशंस होगी। उसके बाद सेम नंबर को हम, क्योंकि लास्ट स्लाइड में जो नंबर लिया था, सेम नंबर को हम अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक ग्रुप्स ऑफ 4। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 ये ग्रुप बन गया, और इसके साथ कुछ नहीं है तो अज्यूम कर लो भाई 3 0 है, ये ग्रुप बन गया। और पॉइंट के बाद 2 है तो 2 0 अज्यूम कर लो, इससे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, नाउ 0110 refer this table, 0110 is equivalent to 6, 0001 0001 is equivalent to 1 and 0100 0100 is equivalent to 4. so point। ठीक, तो ये ग्रुपिंग हो गई। और उसके बाद 16.4 हमारा भी यही आंसर था, 16.4 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। और
रिवर्स वे में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो ये तो और इजी है. Okay, for each hexadecimal digit, you have to refer this table and write the 4-bit binary equivalent. So for digit 4, the equivalent is 0100, 0.0100. For 6, the answer is 0110, and for 1 we have 0001. यही है, ये zeros को इग्नोर कर दोगे, यही बनेगा. ठीक है, तो it works both the way, binary to hex and hex to binary. Okay, एक कन्वर्जन हो गया. एक लास्ट कन्वर्जन रहता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल. ये रह गया, बाकी सारे कन्वर्जन हमने देख लिए. सो द स्टेप इज कन्वर्ट टू बाइनरी एज एन इंटरमीडिएट स्टेज. फॉर एग्जांपल, यू हैव टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर. सो फर्स्ट यू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू बाइनरी. ओके, सो 262.2 in octal number system is given. Convert this into binary. बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत इजी है. हर डिजिट का 3-बिट इक्विवेलेंट फॉर्म लिखिए. ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी में. उसके बाद आपको किसमें करना है, हेक्साडेसिमल में. तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल तो हमने देखा ही है. 4 बिट्स के ग्रुप बनाइए. ओके, 4 बिट्स यहाँ पे है तो 2 जीरो पेंड कर लीजिए. यहाँ पर 3 है तो 1 जीरो पेंड कर लीजिए. ठीक है, और इसका फिर 0100 क्या है, 0100 is 4. वो टेबल जो हमने बनाया था वो रेफर कर सकते हैं आप. 0110 is 6 and 0011 is 1, 16.4. ठीक है, रिवर्स वे में कन्वर्ट करना है. अगर 16.4 in hexadecimal is given and then you have to convert it into octal number system. So again convert it into binary. Okay, now you have to write 4-bit equivalent form. Okay, 4 बिट लिखने के बाद फिर 3 बिट्स की ग्रुपिंग करिए. देखिए, ये रिवर्स वे में जाएंगे तो ये 4 बिट इक्विवेलेंट लिखा हुआ है और उसके बाद 3 बिट्स का ग्रुप करके ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट लिखा है. तो ये भी बाई डायरेक्शनल है, दोनों वेज में काम करता है. वर्क बोथ वेज, ऑक्टल टू हेक्स एंड हेक्स टू ऑक्टल. ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल कन्वर्जन थ्योरी फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम. इसमें कोई डाउट हो तो पूछो. ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, एंड किसी भी नंबर सिस्टम के लिए ये आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज प्रैक्टिस इट. ट्यूट में भी हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करने. ओके, सो आवर कंप्यूटर सिस्टम फॉलोज विच नंबर सिस्टम. हमारा कंप्यूटर जो डिजिटल सिस्टम है, कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं भाई? बाइनरी. Okay, so suppose you have a 64-bit Windows. तो इसका मतलब ये है कि टोटल 64 बिट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 000000, 64 बार 0 और लास्ट में 64 बार 1. इस रेंज के कैलकुलेशंस को करता है. जितने ज्यादा हम बिट्स बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन, उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दैट वो कैपेबल होगा करने. ओके, सो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे. And I have already shared this slide and this lecture will be also shared within 15 minutes. Okay, so have a nice weekend. See you on Tuesday. Excuse me sir. हाँ जी, जो सर आपने जो लास्ट में समझा 64 बिट वो समझाने पर आप क्या कहते बोला हो था ना, आपने? हमारा विंडोज पहले 16 बिट का विंडोज आता था, फिर 32 बिट्स का विंडोज आने लग गया, फिर 64 बिट का आजकल विंडोज चल रहा है. यस सर. कोई भी उसमें एक्चुअली हर चीज को वो 64 बिट में कन्वर्ट कर देगा. अगर आपको 1+1 करना होगा तो 1 को 64 डिजिट्स में लिखेगा और नेक्स्ट 1 को भी 64 डिजिट में लिखेगा. तो इससे रेंज बढ़ गया कैलकुलेशन का. सिर्फ आप 64 बिट से ज्यादा डेसिमल डिजिट्स को कवर कर सकते हैं, है ना. अगर आपके पास सिर्फ अगर आपका सिस्टम 4 बिट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दिया और वो सिर्फ 4 बिट सिस्टम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 0 से 15, 4 बिट से हम ज्यादा मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 15. ठीक है, ये वाली चीज.
हाँ, डेटा रेंज ज्यादा नहीं होगा डेटा प्रोवाइड रेंज करने में। ज्यादा नहीं होगा, डेटा रेंज ज्यादा नहीं होगा। और मेमोरी एड्रेसिंग जो 64 बिट है, ठीक है, तो आप देखो कि जो जितनी ज्यादा बिट सिस्टम होते हैं उस सिस्टम की रैम भी उतनी ज्यादा होती है। 16 यस बिट सर। सिस्टम की रैम कैपेबिलिटी कम होती थी, इट कैन ओनली एड्रेस 2 to the power 16 डिफरेंट मेमोरी सेल, उतनी कैपेसिटी है उसकी। अब 64 4 बिट सिस्टम है, सो इट कैन एड्रेस मैक्सिमम 2 to the power 64 डिफरेंट मेमोरीज यूनिट। तो ऑब्वियसली मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ गई हमारी, ठीक है, रेंज यस भी सर। बढ़ गया हमारे कैलकुलेशन का, स्पीड भी इंक्रीज होती है भाई, ज्यादा बिट्स है तो ज्यादा स्पीड है, ज्यादा बहुत सारे फायदे होते हैं उसके। इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करूंगा, फिर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाएगा वो चीज, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सो थैंक यू सी सर। यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।